स्वागत है आपका रिक्वेस्ट वाले शो में, जहां पे आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि मेरे साथ है वो जिनसे हमें करनी है बातें चार। इंडिया से लेके कनाडा तक इनके चर्चे हैं हजार। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, टैलेंट और खूबसूरती बेशुमार। प्लीज गिव इट अप फॉर रिद्धि कुमार। Hello. Hi Riddhi, welcome to Request Wala Show. How Thank are you doing today? I'm doing very well today. Well, how did you like my introduction? Very nice. I was like, oh my god, he's prepared. I am so prepared. And pumped. Like, I feel more energetic now. I am so glad. Well, Riddhi, you are here. सबसे पहले, right off the bat, I want to talk to you about the Super Boys of Malegaon. The critics are loving it. People are loving you in it. It is amazing. Tell me about the whole story of the film. I would say honestly like a dream project for any actor, any technician, anybody working in the industry, Right. because you've got Zoya, you've got Excel, you've got MGM Studios, you've got like Varun Grover writing it, you know, Reema directing it, Correct. and you've got phenomenal actors to work along with. So it was just a very thrilling ride, and I had the best time. Especially like the set was super sweet. Everybody is really nice to each other, Yeah. and we were shooting in Nasik in Devlali actually, and my dad was posted over there at that point of time. Oh, wow. So I was just staying at home, eating ghar ka khana, and Sahi going hai. on set. So it was fab. Correct. Now tell me कि पूरी shoot के time पे which is like your most favorite memory, ऐसा कौन सा moment था you were like हाय क्या मजा आ गया आज ये करके? I would say there is a scene where it's me and Adarsh and we're watching a film and we're having a conversation. Right. It's that point of time where Malika and his chemistry sort of shines through. Correct. And when we were sort of enacting it, we never like really had to rehearse much. It happened very organically, and sometimes when that happens you feel so natural about, you know, your own performance that okay, this is just going with the flow. And I think to me that was like one of the best moments, the best days that I shot, because it was a Correct. great mood, you know, once you get a perfect shot. So मुझे ये बताइए कि जब आपकी फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई and you know and you received the amount of appreciation that you did, what was that feeling? मतलब were you nervous at first and then you realized कि अरे वाह मैं तो बहुत बढ़िया काम कर लिया है? यार पता है ऑनेस्टली ना, मतलब मैं तो बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो जाती हूँ काम को लेकर। एवरी टाइम अभी भी मैं मूवी देखती हूँ, हम लाइक ये एक सेकंड का पहले ये करना चाहिए था, यू नो सम ये लुक, expression ये बस एक्सप्रेशन, ये थोड़ा सा माइन्यूटेस्ट ऑफ थिंग्स, बट I honestly I didn't have the nervousness because I felt like it was a golden platter that was served, you know, to me and for everybody there. So I was just really excited to see how people find the film, and with all the positive reviews coming in, it just felt nice. Like there was no Amazing. nervousness. अच्छा मुझे ये बताइए कि how did you land up the role, you know, because technically you are the only female lead in that film. So what was the process of बहुत सारे auditions, क्या हुआ? हाँ मतलब it was a process. I did test for it like 3 times, and then the thing is that there is also another female played by Muskan Zafri, who is Adarsh's wife, who's playing his wife, and I had initially tested for that, and then Okay. Reema was like, no, I think I want you for this, and then I was like, okay, fine, because I read the script and I was like, that's such a fabulous part Correct. in itself. Then I tested for that. Then we did another test, like in person and everything, a look test and all of that. And then I Baapre. got it. But yeah, that honestly was a bit nerve-wracking because I was doing my in-person test with Adarsh. Right. And I had only seen his work before. So I was like, oh my God, he's phenomenal. So, but it went really well. And I Well, got the project. Well, he's phenomenal and so are you, and that's the you. beauty of the film. I love it. मुझे ये बताइए कि when you were shooting, right? एक कभी कोई ऐसा moment आया जहाँ पे आपको लगा कि यार मतलब this is nervous, this is, you know, this is nerving, or this is something that you're scared of, या कोई ऐसा moment when you had like probably a breakdown of sorts, but then you came out of it? When we were, so there's this one scene where he and I are sort of breaking apart, and you know, we're crying outside the film studio and stuff. And that point of time, the thing is that I didn't know that we were shooting that scene on that day. Okay. And then it was like the most important scene Of because, course, you know, yeah. we're crying and it's very emotional and heavy on the heart. And I was like, oh shit, what do I do now? But because, you know, we all were so well prepared that on the moment we just went through it, we did the lines and everything. And we were doing the first take, which is like a wide. And so I cry on cue. Oh, wow. I try not to use gliss, and Reema is like, Riddhi, don't cry right now, you know, cry in the close shot. And then I cried in the wide, and then I couldn't get like my real tears later. Oh, God. So I was like, oh my God, I'm gonna ruin this. But that's the beauty of cinema, that you get to do it again, and you don't get to ruin anything.
And again, you know, I had a fabulous co-actor to work with. So we both just sat down and we had a chat, and then I got like really emotional again, and then we did the whole thing. Who's your most favorite person on the set? It's a very difficult question, I know. My favorite person on set, like I would say in general, मुझे रीमा बहुत पसंद है. Okay. मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही cool बंदी है. मतलब she's very intelligent. She's बहुत एक्सप्रेसिव है और बट एट द सेम टाइम जब वो काम पे आती है, मतलब मैं उनसे जब मिली थी विच वॉज बिफोर द फिल्मिंग व्हेन वी यूज्ड टू डू आवर वर्कशॉप्स एंड एवरीथिंग, तो तब मुझे ऐसा लगता था कि ओके यू नो दिस इज हर पर्सनैलिटी. फिर मैं सेट पे मिली एंड मैं सेट गई थी कुछ दिनों बाद जब तक बाकी लोगों ने शूट कर लिया, एंड देन आई वाज लाइक ओ रीमा, बिकॉज शी इज वेरी पर्टिकुलर, शी इज अ परफेक्शनिस्ट, और मैं खुद एक वैसी टाइप की बंदी हूँ, तो मुझे उसका वो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं. आई एम लाइक आई वांट टू बी लाइक हर. ओके, माय फाइनल क्वेश्चन फॉर दिस सेगमेंट, एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे आपसे ये पूछना था कि compared to other people that you worked with, other directors that you worked with, Zoya के साथ काम करना कितना different था? I would just say this one story where when we so Zoya was not there on sets when we were shooting, but I had met her after the shoot at like an after party, and that time I was like, hi, I'm Riddhi, nice to meet you, I play Malika. Matlab, we hadn't met much before, and she's like, hi, I'm Zoya. And the fact that, you know, we work in the same industry. Correct. I worked in the film. I know that, of course, she would know me, but it's just like out of habit you introduce yourself. And she is Zoya Akhtar. She's there because of all the incredible work that she has put up. And then जब उन्होंने भी खुद से introduce किया, तो मुझे एक टाइप का वो personality बोलो या वो एक the groundedness, just that sort of a sensibility, I really liked it. Amazing. So I could just say that, you know, throughout she was fab, and she still is. Well, Riddhi, next मुझे बात करनी है आपसे आपके बारे में, right? Yes. मैंने ये सुना है कि you've been an army kid. Yes. तो आप अलग-अलग शहरों में पढ़ी हैं. जी. उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई करी है. You've done your graduation. You're doing your post graduation. Yeah. और इस सब में you have also done modeling. You've done ads. You've done web series. You've done films. Yeah. You've done Telugu films. You've done Bollywood films. मतलब crazy कर दिया आपने सब कुछ. Crazy. तो आप मुझे बताइए कि how did this journey start? Where did Riddhi find herself, और कैसे Riddhi became Riddhi Kumar, the actor who's sitting in front of me? I would say कि मुझे बचपन से मतलब खुद को एक कला के माध्यम से एक्सप्रेस करना बहुत पसंद है. Okay. मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो एक इंडिविजुअल हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मेरे बहुत थॉट्स है, विचार है जो मुझे कहीं ना कहीं तो बाहर लाने हैं. आउटलेट चाहिए. एंड आई हैव ऑलवेज टेकन आर्ट एज दैट फॉर्म. तो मैं बचपन से हमेशा मतलब कुछ ना कुछ आर्ट फॉर्म्स प्रैक्टिस करती आई, चाहे मैं पेंटिंग करती हूँ, निटिंग करती हूँ, कथक करती हूँ. आपका इंस्टाग्राम पे मैंने स्टॉक कर लिया है. बाय द वे, Riddhi also has a page for her painting and art, which is pretty amazing. It's super cool, by the way. Thank you. So in that journey, मैं जैसे जैसे अलग अलग टाइप के आर्ट फॉर्म्स एक्सप्लोर करती गई, तब धीरे धीरे मैं एक मॉडलिंग के वेंचर में घुसी थी, क्योंकि कॉलेज में आपके इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशंस, पैजेंट्स वगैरह होते हैं. एंड यू रियलाइज हो रही हो कि सुंदर तो मैं बहुत हूँ, तो मॉडलिंग तो मैं कर ही सकती हूँ. ये मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, बट आई वुड से कि ऑनेस्टली मॉडलिंग मैंने ऐसे शुरू की थी कि मैं पैजेंट्स के थ्रू, एंड देन मैं वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनको मॉडलिंग सिखाती थी. तो उनके जो फैशन शोज होते थे वो कोरियोग्राफ करती थी. टाइटल्स, राइट? या फेस ऑफ इंडिया, सिटाडेल, मिस पुणे, और कौन से थे, एक मिस सिम्बायोसिस which was my first, which was like a college thingy, and then I won this thing called RSI May Queen, जो आर्मी, एयर फोर्स, नेवी का एक बॉल होता है. So that. Wow. So then उसके बाद I have a beauty queen sitting in front of me, ladies and gentlemen. Queen, I must say. But yeah, so after that, मैं फर्ग्यूसन में सीखती थी. मैं अपना बैचलर्स फिलोसफी में कर रही थी. वहाँ पे फोटोग्राफी डिपार्टमेंट था, तो वहाँ पे फिर मैंने शॉर्ट फिल्म्स में काम करना, उनके साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सब सीखा. अगेन मैं FTI के साइड में रहती थी, तो वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त थे जिनको मैं असिस्ट करती थी. Correct. तो वहाँ से एक फिल्म का जर्नी शुरू हुआ, एंड देन आई स्टार्टेड लाइक मेरी साउथ में कोई एजेंट से बात हुई थी, एंड देन फिर मैंने वहाँ ऑडिशंस दिए. वैसे मुझे मेरा पहला तेलुगु फिल्म लवर करके वो मिला. एंड देन मेरे पापा की पोस्टिंग कोलाबा आई थी इन नोफरा, व्हिच इज द नेवल बेस कैंप. फिर तो आप मुंबई आ गई, एंड देन यू वर लाइक अब तो मुंबई. अब तो हाँ, मुंबई.
और फिर मैं ऑडिशंस देने लगी एंड देन कोविड आ गया बट उसी टाइम पे आई गॉट माय फर्स्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स जो वेब सीरीज मैंने की थी Correct. कैंडी ह्यूमन क्रैश कोर्स Right. फिर उसके बाद अगेन मैंने साउथ में एक फिल्म की थी राधे श्याम करके जिसमें मैंने कैरेक्टर प्ले किया था वो वन हैंडेड आर्चर का सो Wow. आई लर्नड आर्चरी विथ माय टीथ and then What? yeah I trained for it and I was like कि you know करूँ नहीं करूँ क्या करूँ but then it was so worth it because from that project Yeah. I got Raja Saab which is the other South project Correct. that I'm doing opposite Prabhas. Opposite Prabhas, but you've worked with Prabhas before. That was Radhe Shyam but that Right. time I did like a character and now I get to do the lead. You do the lead. You with Progress, Prabhas. yeah. Bahubali के साथ I देखेंगे know आप. and I've seen Bahubali part 2 like 20 times. I know the dialogues by heart. Oh my God! But can you? I mean, are you proficient in Telugu now? Yeah. So you've done so many projects now. I mean, you've done Telugu films, you've done web series, you're doing Bollywood, and you're going back to working with Prabhas, which is a Yeah. superstar legend. क्या आप हमें उस मूवी के बारे में थोड़ा बहुत snippet देना चाहेंगे कि what are you doing? I mean, मैं उतना ही बता सकती हूँ जितना बाहर है but so basically राजा साहब एक horror comedy romantic thriller film है it's like it's horror comedy all in all but of course there's romance Correct. involved in it. And this is मुझे ऐसा लगता है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ये genre ज़्यादा बहुत explored कम नहीं है. exactly. Correct. So when I first of all I got that part तो मैं बहुत ही excited थी and हाँ. जब मैंने वो script सुनी और जब मुझे पता चला कि what it's about and अभी जो हमने film किया है it's insane. Wow. Like the kind of VFX, the kind of things that they've done, even the kind of makeup and you know when we जो हम horror comedy हम कोई भी horror film देखते हैं हमको एक basic anticipation होता है कि makeup कैसा हो सकता है Correct. या किसी भूत मतलब जो भी चीज़ हो उसका look क्या हो सकता है but यहाँ पे मैंने कोई तो ऐसे हम लोग प्लेबैक जैसे देखते हैं अपना टेक हुआ तो कभी कभी आप देखते हो प्लेबैक तो गलती से कोई और प्लेबैक हो रहा था ना उसे ये क्या बज रहा है एंड देन आई रियलाइज ये हमारी फिल्म का सीन है Wow. एंड आई एम टेलिंग मारुति सर ये हमारी फिल्म का है सो इट्स दैट गुड I can't wait for Yeah. it. और मुझे ऐसा लगता है कि अभी से आपकी इंटरव्यू डेट ले लेनी चाहिए Please because do. I mean difficult हो जाएगा फिर आपसे नाउ आई date नो लेना. यू आदित्य Yes, this is the biggest achievement on request वाला show. But हमने आपकी अभी तक की जर्नी के बारे में बात करी है. We know what's the next project. What is in pipeline? और क्या-क्या आने वाला है? हमें रिद्धि देखने को मिलेंगी. So right now, in South, it is Raja Saab that I'm doing, which has been on for a while. Yeah. So I can't really give my dates anywhere. But I am in talks for like 2 pretty interesting projects. But I can't really speak about it right now because nothing is out there yet. Correct. But yeah. यार रिद्धि राजा साहब में आने वाली है. उसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमें रिद्धि को देखने को मिलेगा. So we are very very excited for Thank that. you. But Oh, sorry to cut you off. I Yeah. also did a Marathi film last year. yes. Which was my first Marathi film. Like, it's insane because I heard the script and the director and we both were crying. Like, it's super sweet. And it will Wow. come around June, July. Mein. It's called Kadi Patta. कड़ी पत्ता. Kadi Patta. Amazing. है ना? मैं तो मतलब हिंदी तेलुगु मराठी को आप कॉन्कर कर रही हैं उसके अलावा और भी कोई लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप देखने को मिलेंगी बिकॉज देन आई वुड हैव टू जस्ट यूज अ ट्रांसलेटर ऑल द टाइम. Well, it's always been my aim to also work in the West. So hopefully that. सो रिद्धि हमने बात कर ली है आपकी जर्नी के बारे में सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के बारे में काफी सारी बातें कर ली हैं एक्चुअली इतने से कम टाइम में लेकिन आपकी जो रीसेंट रील है जो मैंने आपके सोशल मीडिया पे देखी है दैट इज अबाउट यू गो मैया मैया लुकिंग एट द फूड इज what I saw and I was like amazing मतलब कोई इतना फिट इतना सुंदर दिख सकता है और उसको खाना भी पसंद है तो फिर I मेरा love food. you love food well we love that about you but अब हम बात करने वाले हैं खाने के बारे में because what we are going to do next is we are going to play a game with you जहाँ पे हम figure out करेंगे कि आपका favorite खाना कौन सा है. Okay. Okay, so I'm going to give you choices this or that Okay. and then we'll come to one conclusion. Shit. Okay, ठीक है. So Oye, amma. चलिए. So are you ready? Yes. Let's start. बिरयानी और चिकन टिक्का मसाला. Biryani. बिरयानी और तंदूरी चिकन. Mood, but tandoori chicken. तंदूरी चिकन और छोले भटूरे. Bhature with tandoori chicken, but okay. Yeah, That- it is nice. I think. I mean, I would be very surprised that you're saying bhature here, but okay then. I love chicken and puri. Okay. But chole bhature, I think. छोले भटूरे. Yeah. छोले भटूरे और पानी पूरी. Chole bhature. छोले भटूरे और समोसा चाट. I think chole bhature. छोले भटूरे और वड़ा पाव. Chole bhature. छोले भटूरे और कोथिंबीर वड़ी.
if my mom's making it, kothambir vadi. Kothambir vadi or Aluchi vadi, because you mentioned it, so I have to put it in. Okay, aluchi vadi. Aduchi vadi, or actually I'm out of options. We'll give Aduchi vadi. Yay, winner! But do you have like any other food preferences apart from Aduchi vadi? Is there something that you My absolutely love? favorite top tier, like I have 2. हाँ. And both are homemade. एक है भिंडी की सब्जी. And one, I think my top tier comfort food is roti ka chuda, which is basically. ये तो मैं सपने में भी ऑप्शन नहीं दे सकता ना. मैं बोल रहा हूँ छोले भटूरे, चिकन टिक्का मसाला, and she's like भिंडी और रोटी का चूड़ा. It's रोटी का basically चूड़ा. like, you know, the stale bread from last, मतलब हाँ. जो कल की रोटी बची होगी. हाँ. In the morning आप क्रश कर दो और आप फोड़नी दे दो, जो पोहा का सब होता पोहा, है. या, हाँ, या. मतलब क्या कड़ी पत्ता, राई और हल्दी, नमक, प्याज वगैरह सॉटे करके. Do you cook? Yeah. You like to cook? I love to तो cook. फिर आपकी कुकिंग नॉलेज भी चेक कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है? चलो. So I'm gonna give you names of things in Hindi, and you have to tell me what's the English for it. I think, Okay, I think okay. it's ये fairly try कर सकते simple, हैं. fairly Yeah. simple, ठीक है? राई को क्या बोलते हैं English में? Mustard seeds. जीरे को क्या बोलते हैं? Cumin. धनिया को क्या बोलते हैं? Coriander. धनिया. Okay, धनिया is Yeah. coriander. I'll give you that. दालचीनी, Cinnamon. तेज पत्ता. Bay leaf. Okay. I think you're Star फूल. star anise. वो बहुत ही easy था. अजवैन. Carom seeds. Because मैंने Google किया because I love अजवाइन पानी. अच्छा, okay. हींग. Asafoetida. ये तो सबने क्वीन देख ली अब. अरे यार, अब मैं सोच रहा हूँ कि और कौन से मसाले होते हैं. अरे ठीक है, ये बताओ, शैलट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? छोटा प्याज नहीं, सांबार प्याज. यार इनको सब पता है. सांबार का ही प्याज होता है ना. सांबार प्याज. That is correct. Yeah. That is correct. मैं काफी disappointed हूँ because generally लोग ये आंसर नहीं कर पाते हैं. But here we have Riddhi, the superstar, who's absolutely killed it in both the food games, and we are very very happy about Yeah, it. I've cooked it. So that's all, folks. This was request वाला show for today, जहाँ पे मेरे साथ थी वो जिनका सर चढ़ के बोल रहा है हमारे ऊपर कुमार. Please give it up for Riddhi Kumar. Riddhi, thank you so much for being on request वाला Thank show you today. so much. I had the most fun. It was Aw. such a good time I talking know. to you. Thanks for having me. Thank you, Zoom. And I had a fabulous time. And all credits to you and your kavitaएं of like, yeah. That is what I was here for. Yeah. But Riddhi, first of all, congratulations, Thank right, you. for such amazing work that you've done and the Thank work you. that you're doing. जल्दी से सबको बता दीजिए कि आपको ढेर सारा प्यार देना है. सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव देखनी Yes. है, और जब आपकी नई फिल्म प्रभास के साथ आती है उसको भी ढेर सारा प्यार देना है. So please, all yours. Hi guys, this is Riddhi Kumar और हमारी अभी एक फिल्म आई है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव. तो प्लीज जाइए, अभी भी थिएटर्स में है, उसे देखिए और बाद में वो Amazon प्राइम पे आएगी, तभी भी देखिए. और मेरी दूसरी फिल्म द राजा साहब आएगी टुवर्ड्स दिस ईयर एंड, जो है प्रभास के साथ. डू वॉच इट एंड सेंड इन योर लव. You have to give her a lot of love और इनके सारे काम को ढेर सारा प्यार दीजिए. And on this note, this is me Aditya saying hasta la vista baby. Have a great week ahead. Riddhi, thank you so much for being on थैंक यू Request सो वाला show. मच. बाय. रिद्धि कुमार के साथ रिक्वेस्ट वाले शो का ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू Zoom TV.